everybody, this is Samriddhi Sakunia and you are watching HW News Network. As you can see, we are here at Nirman Bhavan. Behind me, there are a bunch of young doctors who have been protesting here for past 4 days. Don't get me wrong, they have been protesting as from the month of November, but here from past 4 days. Their only demand is all the 45,000 doctors who have been sitting idle in their homes should be allotted in some or the other hospitals. Their main demand, the young doctors have been protesting here. They have been agitating here for days over the delay in NEET PG admissions. From the month of November till December, they had 4 meetings with the government. In all 4 meetings, they have just got a verbal assurance and they want a written assurance now. The situation has become so worse that the doctors who are overworking in the hospital for more than 72 hours, they are now in that position that they need therapy. But even then, they don't have time to go to a therapist for their own mental health. We have had conversation with doctors and they say that if this continues, we anyhow are anticipating a third wave, and this continues, and if the government does not listen to us, the healthcare system will collapse. And within a week, if the reports that are coming from the hospitals that the patients are not getting treatment because the doctors are here, in a week the healthcare system will collapse. As you can see that this is a protest by resident doctors of 6 hospitals of Delhi, and it is a nationwide agitation which has started from 27th of November, and it has been carried out in variable phases, and we had 4 rounds of meeting with Honorable Health Minister also. So the matter is actually regarding continuous postponement and delay in conduction of NEET PG 2021 counselling. Normally after the counselling, resident doctors join the respective hospitals of the country by May or June every year. But this year, initially the exam was postponed because of COVID, and because of lack of far-sightedness from the side of government, there was a change in the policy regarding the exam in between after the conduction of exam. So because of that, the case is pending in Supreme Court, and the matter has been continuously being postponed, and it has been delayed since a long time. It has been 9 months now, and the residents have not joined any hospital in India. And as we know that there is imminent threat of third wave of COVID, we want working hands in the hospital. All the hospitals have been working with only 2/3 of their usual strength. So it is like in the first wave, there was lack of PPE kits and experience. In second wave, there was lack of oxygen. And God forbid if third wave, which is expected to arrive in India in February, there will be shortage of doctors all across the nation. So we are very apprehensive of that. We want the hospitals to be strengthened so that we can deliver quality care to the patients. Secondly, all the resident doctors who have been working tirelessly in all the hospitals, they have been exhausted, and they have been mentally as well as physically tired. They are in the burnt out stage because of the shortage of doctors. They have to work for almost 72 hours in a stretch. And as per the rule, they should work for at most 48 hours in a week. But the ground reality is that they are made to work for almost 80 to 100 hours in a week. So the conditions are extremely inhuman, and that cannot be explained in words. And you can yourself imagine that after not sleeping and continuously doing work for 36 hours to 48 hours, how can a doctor make good decisions, and how can he deliver proper patient care in their full potential? So it is affecting the resident doctors who are at work. It is affecting the 45,000 doctors who have qualified such a difficult exam, and they are still made to wait at their homes, and they are not able to join the hospital because of the delay in counselling. It's not like कि हमें ये it was our choice. ये जो हो रहा है ये compulsion के through से हो रहा है. We are compelled to do this. This is our last resort. Since 1.5 years हमारे अब juniors आए नहीं अभी तक है ना. We have been working on 1/3 of strength right now. 2/3 मान लो अभी. After some months, even हमारे जो seniors है, they will be giving their exams. So only we left with 1/3 of the जो strength. So इसमें बहुत मुश्किल हो रही है हमारे तरफ से. Not just our department, सभी departments hospital में. We have been trying this since a long time, and going on protest was our last resort, and we are also very feeling very unfortunate that out of no option was left with us, and therefore we have to resort to this. And we have been writing letters to the ministry since a long time, and we have been writing letters to judiciary also to sensitize them regarding the issue. And we had 4 rounds of meeting with the health minister also. We have been telling him the same things, but I don't know why he is not giving any importance to healthcare of the country.
what was that ki first wave second wave mein we were doing a good work, then thali and all diyas and I don't know what that was just a gesture and they I think कि डॉक्टर जो भी कर रहे हैं कोई मीनिंग नहीं था उस चीज़ का उनके लिए, they were just doing for show off only because if अगर उनके मतलब मेंटल स्टेटस में अगर ये सब होता कि डॉक्टर इतना सब कर रहे हैं तो अभी वो हमारी मांग सुन रहे होते। और ये हम किस लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट, इट्स नॉट फॉर अस ओनली, इट्स फॉर द पब्लिक हु इज जस्ट सफरिंग बिकॉज ऑफ अस। और वो अप्रेजल जो आप बोल रहे हो, फूल बरसाने की या थाल जो बजाने की या कुछ भी करने की, वी डिडंट वांट दैट। ऑल वी नीड वाज मोर डॉक्टर्स, राइट, जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स। जुडिशरी से और जो चीफ जस्टिस हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैटर को अर्जेंट हेयरिंग में डालें और डे टू डे हेयरिंग हो ताकि जितने रेसिडेंट्स परेशान हैं उनको रिलीफ मिले। और सिर्फ रेसिडेंट परेशान नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना, और जो एक्चुअली इस जो प्ली है उसके साथ में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका भी वक्त ज़ाया हो रहा है जो MBBS में आएंगे, क्योंकि उनके साथ भी उनकी एप्लीकेशन अटैच है तो उनका भी करियर खराब हो रहा है, उनका भी साल खराब हो रहा है। द हॉस्पिटल्स आर एक्चुअली अभी फंक्शनिंग ही हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं है कि इट्स क्लोज डाउन। हॉस्पिटल्स, द OPD सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, ICUs आर वर्किंग। जस्ट दैट कि हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स आर ओनली नॉट देयर। रेस्ट ऑफ द हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो भी कंसल्टेंट्स हो गए, दे आर वर्किंग ऑन फुल फोर्स। बहुत खराब हालत हो चुकी है डॉक्टर्स की, और यहाँ पे नहीं, आप ब्रेन ड्रेन इसीलिए तो हो रहा है, सारे बाहर कंट्री छोड़ के क्यों जा रहे हैं। आप बहुत गर्व से बोलते हैं अरे इंडियन ओरिजिन के CEO ही इस कंपनी के वहाँ बन गए। अरे भैया वो इंडिया छोड़ के चला गया क्योंकि आपने उसको एडिक्वेट चीज़ें नहीं दी, उसको वहाँ पे बाहर उसने उसके टैलेंट की वैल्यू हुई। इसीलिए आप अगर ये करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जितने डॉक्टर्स हैं वो भी बाहर जाएंगे। Government need, the people need to realize that the doctors are exhausted now. They have been working tirelessly, and if you take that, if you talk about the duty hours, in a single duty, the resident doctor has to work for 38 to 40 hours in a stretch without sleeping. Then they have to realize that how can you expect from that doctor that he will provide you the quality treatment? That's not possible. We are also human beings, so we want manpower. We are falling short of manpower. We are really frustrated mentally, basically. Physically तो है ही, हम mentally बहुत frustrated है। हमारे जो अपनी काम होती है, थीसिस होगी, अपनी स्टडीज होगी, वो तो छोड़ो कहीं चला गया। We are working on day and night only हमारे जो पेशेंट्स के लिए जो भी है, because सब जगह इज लाइक जो भी आते हैं वहीं पे आते हैं। So we understand, क्योंकि जो भी दुविधा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, we understand from our perspective. But यही है कि we are also right now, we cannot hold back. We cannot go back now. We have to, कुछ तो आना चाहिए इतना, मतलब since it's been such a long day, तो कुछ तो आउटकम आना चाहिए, वरना इस तरह से होने से सरकार will obviously, the government will take it as it is। जो हमारे डॉक्टर्स के जो भी, मतलब नॉट जस्ट आवर डॉक्टर्स, दूसरे ग्रुप्स भी हो गए, किसी और प्रोफेशंस का भी, बैंकिंग का भी हो गए या फार्मर्स का भी हो गए, they'll just take it as it is। मतलब इनका तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ये, बट दिस आपको लग रहा है कम है, बट दिस आर द डॉक्टर्स दैट इज मैनेजिंग द होल हॉस्पिटल इन दिल्ली। आपको लग रहा है कम है, दिस आर द मेन डॉक्टर्स दैट आर एक्चुअली वर्किंग इन दिल्ली राइट नाउ। और इसके चलते, इसके मतलब बिकॉज ऑफ आवर एब्सेंस इन द हॉस्पिटल, इतना प्रॉब्लम्स उनको हो रहा है, लगते ही कम है। बिकॉज पर पर्सन आपको लग रहा है ना, एक डॉक्टर्स अराउंड 100 पीपल तो मान ही लो। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि सोच रहे हैं कि मैंने क्यों इस कैरियर में आया, वाई आई चोज दिस कैरियर, इस दिन के लिए। डेफिनेटली हर कोई ये सोचेगा कि हमने इस दिन के लिए कैरियर नहीं उठाया था, हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे थे। और हम क्या मांग रहे हैं सरकार से कि जो अगर 100 डॉक्टर थे तो उसमें 66 डॉक्टर हैं, अगर जो हमारे डॉक्टर्स कम हैं, हमारे 1/3 डॉक्टर्स, हम उन्हीं को तो मांग रहे हैं। हम कुछ ये तो नहीं मांग रहे हैं कुछ अलग से कि हमारी सैलरी बढ़ा दो या कुछ भी कर दो, जो जायज़ चीज़ है उनसे वो मांग रहे हैं। अगर हमें वो भी नहीं मिल रही है तो दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है एंड प्रोटेस्ट चल रहा है एंड ओमिक्रॉन वेव आती है, तो फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यूज, बट फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट थिंक वी विल कंटिन्यू द प्रोटेस्ट, वी विल नॉट एबल टू कंटिन्यू टू, बिकॉज ऑफ द we will go back to duty for the patients only, not for the government, not for the anyone. We will do our duty for the patients only. हमारे लिए कोई कंसिडरेट हो या ना, बट वी आर सो कंसिडरेट अबाउट आवर पेशेंट्स। हॉरेबल सिचुएशन है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचो। ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं, मरीज जाके देखिए, हर एक हॉस्पिटल में देखिए मैडम, मरीजों की लाइनें में कोई सेवा करने लगे, डॉक्टर सब स्ट्राइक कर रहे हैं। जब डॉक्टर ही परेशान है तो मरीज के क्या करेंगे वो? आखिर उनको जा करके सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार को सुनना पड़ेगा। मांडवीय ये कुछ कर ही नहीं रहे, अब सब अपने पॉलिटिक्स में बजे हुए हैं।
सब अपने पॉलिटिक्स में लीन है। अब वो इलेक्शन का, यूपी का इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, तब तक, जब तक होगा नहीं तब तक इनका सोल्यूशन कोई निकलने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। Whole health system is going to collapse. It's not about Delhi, it's all over India. Patients from adjoining states to Delhi come to the national capital for their treatment. However, because of the protest held by the resident doctors, the patients have been complaining that they are not getting proper treatment.